Hello everyone, very good evening. Good evening. I hope you all are doing good. कैसे हो सभी लोग? Everyone fine? सबने होमवर्क किया है क्या? मैंने एक होमवर्क दिया था, if you remember. How many of you tried it or did it? There was non-conducting solid sphere and it had charge inside it distributed in the volume. ठीक है, because this is solid sphere, non-conducting. And question was, what will be the value of electric field at any point inside at a distance r? How many of you tried it? Lakshmi, Navyashri, Ranju, Priya, Miss Mitha. What is the meaning of your name? Sanjana, Nitish, Hima, Chandrika, आदि. कितने लोगों ने किया ये बताओ पहले? वेनु, श्रीनिधि, श्रुति. Anybody who did it or who tried it? Yes. बोलो. नहीं किया है तो बोल दो नहीं किया है. As usual. I'm sitting so far. I won't be able to. I mean, punish you in any way. है ना? तो बता दो. और ऐसे भी this is not an era of punishment. I mean, somebody else giving to somebody this sort of punishments. That time is already gone. So you can say whoever has done it. Nobody did it. This is really disappointing. अभी तक मैंने whatever homework I gave, nobody did even a little of that. I mean, what sort of expectations should I keep from you people? तुम ही लोग बता दो क्या करोगे? Not doing any question. This is not entertaining, you know. This is really not entertaining. Tell me. Yes. Am I audible? Chalo, let me launch the poll. Since then I'm speaking, nobody is letting me know anything. So I will do the class check. Am I audible? Am I visible? Everybody? Yes. Then you can say something, right? Okay, for one student, I'm not visible, but I'm audible. Maybe you're facing internet issue. चलो ठीक है. जब इंसान से कुछ पूछा जाता है ना, you are asking something with somebody and they are not saying anything. Complete silence. Complete silence means what? They are accepting they have done nothing. In this case, otherwise it's like we have done the mistake. We have committed the crime. So यहाँ पे तुम लोगों ने crime commit किया है. You have not done work at all. क्या बोलूँ अब? कुछ नहीं बोल सकती. चलो. Let's go through previous class, what we did in the previous class. So in previous class, we did what will happen to dipole if we are placing dipole in external electric field. So first we talked about force, done it. And I said that when you put force in when you put dipole in uniform electric field, if E is uniform, and here you are keeping what? Here you are keeping one dipole, then on dipole net force acting will be 0. Second case, I told you, if electric field is not uniform, I have told you how to identify pictorially electric field not uniform. Spacing between lines will be different. And in this electric field, if we are keeping dipole, then force won't be 0, because at the point of negative charge and positive charge, electric fields are different. And hence electric force, that is Q into E, will be different on both the charges. So force not equal to 0. Then we studied torque. What will be the value of torque acting if you are keeping dipole in external electric field? So its value is P cross E, irrespective of field is uniform or whatever. Okay.
So this is the formula. After that, we talked about potential energy of the dipole. So if you're keeping dipole in an electric field, making an angle theta with the E field, then potential energy formula is minus P dot E. Okay? Here I talked about equilibrium of dipole. You know? So let's do that in the next page. In equilibrium of dipole, we studied several things. चलो यहीं पे explain करती हूँ. So equilibrium meaning what? Equilibrium meaning net force acting is zero. This is only possible if electric field is uniform. ठीक है? And torque is zero. This is possible for two angles, theta equal to 0 degree and theta equal to 180 degree. Now for these two angles, dipole is in equilibrium. For one angle, it is in stable equilibrium. For another, it is in unstable equilibrium, right? So equilibrium we are getting for two value of theta, one 0 degree, another 180 degree. At angle 0 degree, equilibrium is stable because in this case energy is minimum, and here equilibrium is unstable because here what energy is maximum. Further, I told you one more thing, that when we are keeping dipole in stable equilibrium, and from stable equilibrium, if we disturb dipole by or we displace dipole by a small angle, then dipole will perform SHM, and the time period of that SHM will be 2 pi I by PE, where omega is equal to root under P by I, angular speed. ठीक है? So these were the things we studied. फिर हमने पोटेंशियल निकाला था for different geometries, है ना? So we calculated potential because of what? Non-conducting hollow sphere. So if there is non-conducting hollow sphere having charge Q on its surface, then at an outside point potential is KQ by small r. On the surface it is KQ by r. And then in homework I gave you what will be the value of electric potential at any inside point for non-conducting solid sphere. So for let me give you the proper explanation. Sorry, एक काम करते हैं, रुको. So first we talked about non-conducting hollow sphere. So non-conducting hollow sphere के लिए what will be the value of potential at an outside point? KQ by R. On the surface, KQ by capital R. And inside potential will be what? It will be same as that on the surface. Because for inside point, electric field is 0. And we learned one more formula that is equal to, that is dV equal to minus E dot dr. So if electric field is 0 at any inside point, then dV will be 0. That is, potential will not change for any inside point. That is, potential is throughout constant at any inside point, and this constant value is equal to the potential at the surface. Okay, and that is equal to KQ by R. So कोई inside point के लिए भी potential value will be how much? KQ by R. Okay. Now after that we studied for non-conducting solid sphere. ठीक है, non-conducting solid sphere. So for non-conducting solid sphere, charge will be in the volume, not on the surface, right? Because in its volume, we can keep things. It's not hollow. Now, potential at an outside point was KQ by R. On the surface, it was KQ by capital R. And I told you to calculate what will be potential inside at any inside point. ठीक है? So यहाँ आप देख लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा. दिस वाज द क्वेश्चन आई गेव टू यू. सो अभी तक जो हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, अगर आप नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात करो तो एक्सटर्नल पॉइंट एंड फॉर पोटेंशियल ऑन द सरफेस के लिए जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला इज ट्रू फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑल्सो. For non-conducting hollow sphere, inside point पे potential KQ by capital R है, and for non-conducting solid sphere we need to calculate. ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं
क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच इज द बेसिक फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। मैंने कल डेरिवेशन भी तुम लोगों को दिखाया था बाकी केसेस के लिए, आई डिराइव्ड वन, ठीक है। सो यू जस्ट नीडेड टू यूज दैट डेरिवेशन। देखो तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, और जब कर नहीं रहे हो ना, तो मैं सीधा सीधा एक बात बता दूं, इन अ वेरी blunt line I would tell you, you are not learning. First thing, you are simply coming to the class, you are listening to my words or in short the lecture, and then you are simply closing your copies and also the knowledge, because to the long you're not practicing, whatever you're learning is not becoming yours. Let me tell you this thing very frankly, especially in physics, in mathematics, if you don't practice, that learning is not going to be yours, ठीक है। सो सिंपल है, तुम सुनोगे और जाओगे, एंड आफ्टर 2-3 months यू विल रियलाइज कि टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। But the fact is what? You people are not practicing. And if you people are not practicing, what will happen? You're not going to learn it. तो अभी मैं फिर से डेरिवेशन करूंगी, कोई फायदा नहीं होगा, नथिंग। आई मीन तुम लोग बस देखोगे। पता है फिजिक्स कैसे सीखते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग, फिजिक्स को सीखने का एक ही तरीका है। फर्स्ट थिंग इज यू नो द बेसिक, and just by knowing the basic, after that what you have to do, you have to pick good questions, and then you have to work on the questions. While doing question, you will understand that basic is important, but the thought that you put in every question will make you learn more. So learning can come that way. It's not like in a classroom, if you're sitting you're learning everything. No, you're just learning 20% of what you need to learn. Let me be very frank. So only 20% you are learning just by listening the lecture. Rest 80% will come from you, and it will come when you will practice the questions. So तुम लोग कर नहीं रहे हो, मैं रोज रोज इस चीज को emphasize कर रही हूँ, prioritize कर रही हूँ। I'm just, I mean repeating the same thing, but you people are not listening to it, paying no attention at all. क्वेश्चन नहीं करोगे कैसे होगा? आई मीन व्हाई एम आई डूइंग दिस थिंग? इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री लेक्चर, है ना? हु इन्वेडेड व्हेन, which war happened when, what was the story behind that, why it happened. It's not something that you are going to listen to some anecdotes or some stories and then that will stay in your mind and then that is enough. No, it's a thing of application, right? So you need to apply. क्वेश्चन कर नहीं रहे हो तुम लोग, अब फिर से मैं वही लेक्चर दूंगी, सेम चीजें डिराइव करूंगी। व्हाट इज द बेनिफिट यार? सीरियसली, नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो वी यूज द फॉर्मूला dv इक्वल टू, अगर तुम लोगों ने ट्राई किया है तो ये भी बताओ ना कि ट्राई किया था। कुछ नहीं बताते हो तुम लोग। You people should do it. Yes, Lakshmi, I expect it out of you. I know you some of you have been really maybe all of you have been continuous in the classroom. I mean, you have not skipped any lecture, but still, painful thing is कि that also is not going to help you. इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। तुम लोग से गुस्सा करके क्या मिलेगा बताओ? देर इज नो पॉइंट, इतने दूर बैठे हो, फालतू की दुश्मनी क्यों लेनी, है ना? तो प्लीज तुम लोग थोड़ा हेल्प करो खुद को। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे जितना सीखना था मैंने सीखा है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब देखो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। So here we are talking about difference. So we need to take 2 points. एक तो वो point where you have to calculate potential, and one more, the point at which we already know the potential. So we already know potential at r equal to infinity. Here potential we assume as what? 0. ठीक है? So we will be taking 2 points. One is at a distance r from the center, and another, or let's say this is r naught from the center, and another one is at a distance infinity. Let's say this is point A, this is point B. ठीक है? Now how the potential will vary as we will move from point B to A. When we are moving from point B to A, then we have to calculate the difference. So let's go for it. क्या करेंगे हम? dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो जब तुम B से A आ रहे हो, है ना? So B से A when you are coming, there is surface on the way. So let's say this point is P. ठीक है? So up to from B to P, electric field will be how much? Here electric field is there, right? So electric field formula
for any point lying between B and P will be equal to how much? KQ by R square, where Q is charge inside a sphere, R is distance of that point from the center. So when you are traversing from B to A up to P point, you are outside the sphere and their electric field is KQ by R square. And when you are traveling from P to A, this point, all these points lying between P to A is inside point, where electric field is different. Electric field का formula क्या है inside point के लिए? Rho R by 3 epsilon naught, where rho is equal to how much? Q by 4 by 3 pi r cube. ठीक है, so two different electric field values are there for if you are traveling from B to A point. So here we need to do integration very carefully. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आई मीन ई और डी आर के बीच का अगर एंगल आप चेक करो तो ई और डी आर के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है. सो यहां से आप लिख लो माइनस ई डी आर कॉस 0. ठीक है, सो दिस इज योर ई डी आर. नाउ ई को क्या लिखोगे? E1 dr plus E2 dr. Why I'm breaking it like this? Because electric field E is not same everywhere. From B to P it is one thing, from P to A it is another thing. That is why I've broken here. अब यहाँ पे dv लिखो आप, minus sign was there. ठीक है, minus sign को मैं इधर लेकर आती हूँ. So now if you solve it, put the values. E1 का value क्या रखोगे आप? KQ by R square. ठीक है, and that is equal to yes R square dr plus क्या रखोगे आप? E2. E2 is how much? Rho R by 3 epsilon naught dr. ठीक है, this is this. Now how these values will change? For this electric field, R is changing from infinity to capital R. यानी कि B point from the center is at a distance infinity and P point from center is at a distance capital R. So infinity to R, and this electric field value is from R to small r. So like this we will integrate things up to R naught ले लो क्योंकि इस point को मैंने R naught लिया है. So R to R naught. Now you need to solve it. अब आप इसको solve कर लो. KQ by कितना मिलेगा? -1 by R. ठीक है, KQ इंटू -1 by R इंफिनिटी टू R प्लस क्या लिखोगे आप? रो R dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? R स्क्वायर, एंड दिस इज वेरिंग फ्रॉम R टू R. ठीक है, और यहां से अगर आप सॉल्व करो तो माइनस KQ by R, बिकॉज व्हेन यू विल पुट सॉरी यहाँ पे लिमिट आप पुट करो. -1 by R का लिमिट क्या है? इंफिनिटी टू R. सो यू विल पुट हियर -1 by R minus 1 by infinity. So 1 by infinity is 0. This will remain, sorry, capital R, minus KQ by R. Now put things here, rho R naught का square minus R का square. And R square by 2 होगा इसका value. So rho by 3 epsilon naught 2 into this. So rho by 6 epsilon. ठीक है, rho by 6 epsilon naught this plus this. This is going to be dv. dv will vary from what to what. At infinity, dv is 0. At r naught, let's say dv is v. So this is equal to minus v. So this is equal to minus v. Done it? Now you simply need to arrange this thing. You will be getting the formula, whatever formula is given. इसको अगर देखो यहाँ पे q और रो को आइदर क्यू में चेंज कर दो या क्यू को रो में चेंज करो, वट एवर यू फील लाइक. अगर आप क्यू को रो में चेंज करते हो दैट विल बिकम 3 रो. I mean here q will become how much? 4 by 3 रो pi r क्यू. यही होगा ना q. सो q को यहाँ पे आप पुट कर सकते हो. k को लिखो 1/4 pi epsilon naught k, एंड q को आप क्या लिखोगे? 4 by 3 रो पाई r क्यू डिवाइडेड बाय r. ठीक है, k q by r लिखा मैंने, प्लस रो बाई 6 epsilon naught r naught स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ठीक है,
बस तुम्हें सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे. सो 4 पाई विल गेट कैंसल्ड. ठीक है. And 1 r will get cancelled, and this will look like rho by how much? 3 epsilon naught rho r square by 3 epsilon naught. प्लस कितना है ये? रो बाई 6 epsilon naught r naught square minus r square. This is the value of minus v. Now you can solve it. ठीक है. अब आप इसको सॉल्व कर लेना. You will see. मैं इसको इसलिए डिराइव करना चाह रही थी so that I can show you how you will do this. Here single formula for electric field you won't put. You will break electric field into two parts क्योंकि when we are coming from infinity to point A inside the sphere, electric field formula is not same throughout. So this is the way how you will do the integration. ठीक है. So this is how we are going to do this. I hope it is clear. किसी को डाउट है तो बताओ. Anyone having doubt so far in this? If you want the final answer, you can see here. यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो. So this is अच्छा चलो फाइनल आंसर मैं लिखती हूँ. माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे? राइट हियर माइनस बी 2 रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 2 रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. ध्यान से देखो आर स्क्वायर को. फिर इसको ब्रेक कर दो. रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर. रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट r naught का स्क्वायर माइनस दिस इज हाउ मच? रो r स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. रो r square by 6 epsilon naught. So this will become how much? Rho r square by 6 epsilon naught plus rho r naught square by 6 epsilon. ठीक है. So कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं किया है ना? एक बार चेक कर लेना यार. दिस वॉज विथ माइनस साइन. मैंने इसको प्लस कर दिया क्या? यस. दिस वॉज विथ माइनस साइन राइट. तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा. यही गलती किया मैंने. ये माइनस होगा. ठीक है. सो दिस विल बिकम -3 रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. अगर अब आप v लिखते हो तो क्या लिखोगे? रो आर नॉट स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट -3 रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन. ठीक है. यहां से अगर आप पुट करते हो रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन लेते हो यू विल गेट आर नॉट स्क्वायर माइनस 3r का स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे हमने एक मिस्टेक और किया है. इफ यू कैन नोटिस तुम लोगों ने बोला भी नहीं E और dr के बीच का एंगल क्या था. अगर ध्यान से सोचो तो वी वर मूविंग फ्रॉम B टू A. हम B से A की तरफ जा रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. So electric field outward है, we are moving inward. Direction of E and dr is what? Negative. I mean opposite. So angle between this will be 180. And if it is 180, minus minus क्या हो जाएगा? ये plus already हो जाएगा. ठीक है. So यहाँ पे minus देने की जरूरत नहीं थी. ठीक है. So here you will write like this. So finally this will be minus, this will be plus. This is minus. This is plus, this is minus. So answer will be rho by 6 epsilon naught 3r square minus r naught का square. This will be your answer. अगर confusion है I can do it again for you, but let me know in the chat section. तुम लोग का क्लास आते आते मेरा दिमाग बिल्कुल थक जाता है. So I really feel once again. ठीक है. चलो एक काम करती हूँ, सारा हटा देती हूँ यहाँ से, वापस से करके बताती हूँ. चलो सब हटाते हैं. What was the question? Question ये है, there is a solid sphere. It has plus q charge inside. ठीक है. This is the center. At this point we have to calculate potential का value. This distance is r naught. Now the thing is, which formula we are going to utilize for calculating this? dv equal to minus e dot dr. This is the formula we are going to use.
सो डीवी इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड if by using this formula we have to calculate potential at single point, we need to take 2 points, right? So 1 point naturally we take at infinity, because at infinity we know potential is what, 0. So whenever you use this formula, na, we take 1 point generally at 0, at infinity, because then dv, that is final point, let's say is this p, and initial point is this, let's say q. So potential at p minus potential at q करोगे इसको. So if you know already one, that is potential at q, which is 0, then you can easily calculate vp with the help of integration, right? And that is why taking 2 point is very important, and 1 point will be always at infinity. तो चलो मैंने infinity पे ले लिया. अब क्या करना है मुझे, इस पॉइंट से इधर की तरफ जाना है. Start moving towards this point. So you are moving in this direction. Done. And electric field is directed in this sense, because positive charge, electric field will be outward. We are moving from q to p. So if you see here, angle की अगर मैं बात करूं तो e dr क्या लिखोगे, cos 180, and which will give you how much. चलो let's save the space actually. So क्योंकि हमें बहुत चीजें लिखनी है. डन है. सो यहाँ लिखती हूं मैं, दिस विल बी माइनस ई डी आर. E or dr, displacement is towards the center, electric field is away from the center, that is cos 180, and cos 180 is minus 1, so this will become EDR. Clear hai? This is EDR. Now let's write the formula of E. Now we cannot write single formula of E. Why? Because when you are moving from Q to P up to the surface of a sphere, value of electric field is kq by r square. And from sphere surface to the inside point, electric field formula is rho r by 3 epsilon naught. So we need to differentiate it for two different regions. One varying from infinity to radius, and another varying from radius to r naught. हमें दो different segments में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको segments में break किया. So first segment is kq by r square dr, and it will vary from infinity to r, and then another one is your rho r by 3 epsilon naught. It will vary from where to where, r to r naught. Now use the integration. अगर आप integration use करोगे, which one, breaking वाला बोल रहे हो ना? तो ब्रेकिंग में ये हो रहा है ना, देखो जैसे तुम कहाँ से चल रहे हो, तुम कहाँ से चल रहे हो, क्यू से चल रहे हो ना, क्यू से कहाँ पहुंचना है तुम्हें, पी तक. आई मीन डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर जो तुम कर रहे हो, ये ई डॉट डी आर मुझे कहाँ से कहाँ करना है. ठीक है. सो दिस थिंग वी हैव टू, आई मीन वन पॉइंट इज पी, अनदर पॉइंट वी हैव टेकन एट इंफिनिटी. So if another point is infinity, then to reach to the point P, we need to move from Q to P. और जब आप Q से P move कर रहे हो, तो from Q to the surface, ये वाला point तक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ by R square. और तुम्हें पता है for any inside point, electric field formula is rho R by 3 epsilon naught. So when you are moving from infinity to this point, up to this point, electric field formula is different, kq by r square. And when you are moving from this to the center, ठीक है, center मैंने थोड़ा geometrically it's not looking correct, but let's say this is center, then you are moving from surface to point P, यानी कि you are moving inside the sphere, and for inside the sphere electric field formula is rho r by 3 epsilon naught. So if you have to write the value of E, you cannot write single value of E. What you need to do is you need to break it into two intervals. One will be from infinity to r, another will be from r to r naught. And that is why I have broken it into two intervals. Is it clear, Lakshmi? Okay, thank you. चलो, thank you. अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन तो आता होगा. dr by r square का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 by r. Put the values infinity to r. Here there is kq. सब कुछ को सही से लिखो, ठीक है.
प्लस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, बाहर ले लो। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2। इट विल वेरी फ्रॉम आर टू आर नॉट। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे के क्यू, दिस विल बिकम हाउ मच, -1 by r, -1 by infinity, ठीक है। एंड दिस विल बिकम हाउ मच, 3 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, 2 को बाहर ले लो, ये 6 हो जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अब आप यहाँ पे फिर से लिखो, 1 by infinity is 0 माइनस के क्यू बाई आर प्लस रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो क्यू, रो और क्यू को एक टर्म में लेकर आ जाओ, आइदर रो को क्यू में कन्वर्ट कर दो या क्यू को रो में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्यू को रो में कन्वर्ट किया था फॉर्मूला को सेम सेम लिखने के लिए, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या है, Q divided by charge per unit volume. So this is this. And if you have to write Q in terms of rho, this will be 4 by 3 pi r cube into rho. ठीक है। So right here, K को ब्रेक कर दो आप। K क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught। यहाँ पे R है। अब आप Q का वैल्यू लिख डालो। Q कितना है, 4 by 3 pi r cube rho। प्लस क्या है यहाँ पे, रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सही से ब्रेक करो, 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक आर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा। सो रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग, रो आर आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये क्या है, इसको भी अब ब्रेक कर लो आप विथ नेगेटिव साइन। अगेन नेगेटिव साइन को मिस मत करना। रो आर नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय हाउ मच, 6, सॉरी स्क्वायर है, 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये डीवी को अगर ब्रेक करोगे तो ये इसका लिमिट होगा वी एट इंफिनिटी। जैसे यहाँ पे इंफिनिटी लिया है ना, तो वी एट इंफिनिटी इज 0 एंड वी एट एनी डिस्टेंस आर नॉट, लेट्स से v, so this is v minus 0। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, so v पे लिमिट तुम क्या रखोगे, 0 से v, so that will become v minus 0, so that is v, that is v। so v is equal to how much, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, so minus 2 रो r square by 6 epsilon naught minus रो r square by 6 epsilon naught, they will become how much, यहाँ से भी सारी चीजों को हटा दो। So V is equal to -3 रो r square by 6 epsilon naught, यही है ना, यस, प्लस रो r नॉट स्क्वायर प्लस रो r नॉट का स्क्वायर बाई 6 epsilon naught। अब आप क्या करोगे, रो बाई 6 epsilon naught को ले लो कॉमन, you will be getting answer as how much, r नॉट स्क्वायर minus 3r का square। This is the answer you are going to get, ठीक है। Everyone agree? मैडम डाउट, हाँ बोलो। लाइन टू एक्सप्लेन। सॉरी, लाइन टू एक्सप्लेन मैडम। एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। I don't know if you are not audible to me or your voice is low. Maybe. Try again. What you were saying? मैडम लाइन टू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। Which line? Whole thing or some particular thing? सेकंड लाइन नंबर 2। In this slide? 2 लाइन नंबर 2 मैडम। This one? Sorry, can somebody help me in understanding? Slide number 2. Line 2. Line 2 back means back तो फिर different चीजें है ना. Which line to this one? Okay. अच्छा तुम मुझे बताना, this line you are talking about?
Yes, madam. Okay. So in integration, or why I've written like this, that you want to know. Madam, below, madam. Below this one. Yes, madam. ओके सो बेसिकली यहाँ मैंने इंटीग्रेशन किया है. तुम देखो dr/r² का Madam, why वैल्यू क्या don't we होता है. how हाँ minus how minus come? हाँ. सो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, ये x एंड dx का फॉर्मूला क्या होता है Before page, इंटीग्रेशन का. before x एन page, प्लस व्हाट व्हाट. before page. या That page, madam. How या minus got line ये 2? माइनस पूछ रहे हो ना, दिस माइनस यू आर आस्किंग राइट. Yes, madam. Yeah, that only I'm explaining. Give me some time. So its formula is this: x in dx को. Here you are differentiating what? R to the power minus 2 dr. So if you will differentiate it, you will get r minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. So it will become minus 2 plus 1 minus 1, and this will become r to the power minus 1, that is minus 1 by r. So that is why I've written here minus 1 by r. Okay, madam. Okay. Okay. ठीक है. डन है. चलो. Okay. So these are the things. This is the final formula. Everyone clear with this? देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे तुम लोग प्लीज फोकस करो, थोड़ा बेसिक्स को क्लियर करो. एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? किसी को डाउट है? क्लियर है? चलो ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ वी विल लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. ठीक है. अभी तक मैंने किस किस चीज के लिए डिस्कस किया? सिर्फ नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसके लिए फॉर्मूले डिस्कस किए. ठीक है. नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए मैंने क्या क्या बताया? ऑन द surface इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq by sorry potential is kq by r. For outside point potential is kq by small r. For inside point potential is same as that on the surface. So for inside point it is still kq by r. This is for non-conducting hollow sphere. And for non-conducting solid sphere, for outside point, again potential is kq by r. And for a point on the surface, potential is kq by capital R. And for a point inside, potential is this. Okay? We so far didn't read what is the value of electric field. Also I didn't discuss more about conducting. So conducting solid sphere या conducting hollow sphere के लिए we didn't discuss potential and electric field. So that I will do after I will be done with explaining how conductor behaves in electric field. ठीक है. So this is called electrostatics of conductor. I mean how conductor behaves when you place conductor or when you drop conductor in electric field. चलो देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज अ कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ. कंडक्टर का सिंपल मीनिंग ये है कि इट हैज फ्री चार्जेस. ठीक है. इट हैज व्हाट? इट हैज फ्री चार्जेस. फ्री चार्जेस मींस इट हैज फ्री नेगेटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज. दैट इज वाई मैंने ऐसा डायग्राम दिखाया है. इसके पास प्लस माइनस सारी चीजें हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, लेट्स से इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया. सो अब इस रीजन में सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है. व्हाट विल हैपन टू दिस फ्री चार्जेस? I have told you, if electric field is there, then on positive charge, force acts in the direction of electric field. And on negative charge, force acts opposite to the direction of electric field. So, जैसे ही you will switch on electric field, what will happen? On positive charge, force will act in the direction of electric field. ठीक है. And on negative charge, force will act opposite to the direction of electric field. So this is the direction of forces acting on these free charges. What will happen because of this force acting? Negative charge can go far, far, far up to
the surface point. So negative charge will start accumulating on the surface, on this surface, and positive charge will start accumulating on this surface. Okay, so this is going to happen. Done है? पहली चीज याद रखो, when we are dropping conductor in an electric field, charge separation will happen. Free charge will start getting separated. Positive charge in the direction of electric field, negative charge opposite to the direction of electric field. So ध्यान से सोचो, when charge separation will happen like this, then what will happen? Because of this charge separation, internal electric field will get generated. How? यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन क्या होता है, निकलता है. सो फ्रॉम हियर फील्ड लाइन विल कम आउट लाइक दिस एंड इट विल एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज. So second point, because of charge separation thing happening, what will happen? Internal electric field will get generated, and this internal electric field getting generated has direction opposite to the direction of external electric field. ठीक है? So what happened? There was a conductor. We switched on electric field. That is, we supplied in electric field externally. Done it. And because of that external electric field, force started acting on the free charges. So charges started separating. Separation of charge resulted in positive layer of charge on the one surface, negative layer of charge on the another surface. Because of this charge separation, electric field got induced internally. So this is E internal or electric field induced. Okay. Since now what will happen, as E induced will keep on increasing. अभी देखो यहाँ पे अभी भी इसके अंदर free charges है, positive and negative. Now on this positive charge, because of external electric field, force will act in this direction, in the direction of electric field, and because of E induced electric field is also there. Because of that, force will act in this direction. Okay. To the long E external is greater than E induced, what will happen? Charge, positive charge will go to the right hand side, negative charge will go to the left hand side. Okay. And there will be a moment when both electric field will become equal. And when both electric field becomes equal, in that case, no net force will act on the positive or negative charge, and hence no charge separation. Okay? And then we will say a steady state has reached. Done it? So क्या हुआ? सबसे देखो मैं स्टेप वाइज जाऊंगी. सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप, we switched on the electric field, and the moment we switched on the electric field, first thing that happened is charge separation. Charge got separated. And because of charge getting separated, what happened? E internal or electric field got induced. Electric field got induced. Okay? And because of induced electric field induced का direction किधर है? तो यहाँ पे मैं तुम्हें direction बता दूं, E external in this way, then E induced was in this sense. Now because of induced electric field, also force will act on the free charges. Okay? To the long external electric field is stronger, positive charge will come here, negative charge will come here. Then there will be a moment when both force will become equal, or both electric field will become equal. ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, then on any charge no net force is acting, so no separation of charge will happen after that point, and we will say that conductor में steady state situation हो गया है, जहां पे कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हुआ? बिकॉज ई एक्सटर्नल इज इन दिस डायरेक्शन, ई इंड्यूस्ड इज इन दिस डायरेक्शन, and both are oppositely directed, having equal in magnitude after certain interval of time, and that is why net electric field inside conductor is what? ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो मैं बता दूं, हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. क्या ये हमेशा जीरो होगा? सो उसके लिए असर्शन रीजन में तुमसे पूछ सकता है.
ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमारे पास कंडक्टर था, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस फ्री थे। ठीक है। मैंने जब तुम लोगों को एक्सप्लेन किया तब मैंने ये बोला कि सपोज कर लो एट t इक्वल टू 0 टाइम वी स्विच्ड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और द मोमेंट वी स्विच्ड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सेपरेट होने लगा। सो चार्ज को सेपरेट होने में इट विल टेक सम टाइम, मे बी इट्स नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बट इट्स टेकिंग सम फाइनाइट टाइम, राइट? सो उस चार्ज सेपरेशन में टाइम लगेगा, यानी कि इट विल टेक टाइम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट इंड्यूस्ड and for induced electric field to become equal to external electric field. डन है। सो स्टेडी स्टेट हमें कब मिल रहा है? आफ्टर सम फाइनाइट टाइम, है ना? और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब ही यही है कि E इंड्यूस इज इक्वल टू E एक्सटर्नल। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि E नेट इज 0। तो electric field inside conductor is not initially 0, but yes, after some fraction second itself, nanosecond, that will become 0। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि क्या हर टाइम 0 था? नहीं। अगर आप 0.00001 सेकेंड की बात करो तो डेफिनेटली इट वाज नॉट 0। ठीक है। तो यू विल से लाइक इट्स 0 after steady state it has reached, and that it will reach after some fraction of second। तो बहुत जल्दी रीच कर जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। then in whatever questions we will deal, I mean whatever discussion we will do, we will always say कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। you won't say कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है unless and until it is talking about the time before it has reached steady state। ठीक है। so general statement is electric field inside conductor is what? It is 0। any doubt anybody? किसी को डाउट है? संजना, राजू, नवेश, मेघा, वर्षिनी, मीनाक्षी, किरण, दिनेश, कार्तिक, लक्ष्मी, वर्मा, नोबडी? कोई डाउट नहीं है? बताओ। इफ यस लेट मी नो। नो डाउट्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू। Let's note the second point. Electric field inside conductor is 0, we know. Second point is, at the surface of a charged conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point। ठीक है, थैंक यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर। अब देखो कंडक्टर हमने ऐसे बनाया था, मैंने क्या बोला तुमसे? मैंने ये बोला कि प्रीवियस केस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऑन दिस सरफेस पॉजिटिव चार्ज वाज एक्यूमुलेटिंग, on this surface negative charge will accumulate। ठीक है। there was electric field externally, so after a steady state it will look like what? electric field externally था, ऐसे आ रहा था। since electric field is 0 inside the conductor, कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाओगे, अगेन इट विल कम आउट लाइक दिस। ठीक है। सो कहीं ना कहीं कंडक्टर इज एक्टिंग लाइक इट इज कीपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, है ना? अगर तुम्हें कुछ ऐसे सामान को छुपाना है जिससे यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कीप दैट मटेरियल और दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंडक्टर, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। ठीक है। एंड लुक एट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी नॉर्मल टू द surface, it has to be normal to the surface। ठीक है। सो एट द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो जो कंडक्टर होता है ना, दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका सरफेस क्या होता है? उसके सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है। सो उसके सरफेस के हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड आई हैव टोल्ड यू, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? नॉर्मल। सो आइदर सेकेंड पॉइंट की वजह से थर्ड पॉइंट ट्रू है या थर्ड की वजह से सेकेंड ट्रू है। सो इफ यू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल, सॉरी, कंडक्टर के सरफेस से,
इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कंडक्टर विल बी व्हाट, इट विल बी इक्विपोटेंशियल सर्फ। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट आई विल से द इंटीरियर ऑफ, ओके थर्ड पॉइंट तो ये है, चलो फोर्थ को पहले डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सर्फेस। ठीक है, अब देखो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर तुम कंडक्टर की बात करो, कोई भी रैंडम शेप में तुम कंडक्टर ले लो, मैंने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया, सेकंड किया, थर्ड कर रही हूँ, फोर्थ आई विल लेट यू नो। फोर्थ अभी मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। सपोज कर लो कंडक्टर है, ठीक है, नाउ कंडक्टर के अंदर की पॉइंट की बात करो, सपोज इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। गॉस लॉ हमने पढ़ा है, गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, कहता है ना ये क्लोज सरफेस के लिए। एंड फॉर कंडक्टर वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगर इस पॉइंट से मैंने गॉसियन सरफेस बनाया पास करता हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पी से, तो पी पॉइंट जो भी ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके सरफेस पे, nowhere, because this whole Gaussian surface is inside conductor and inside conductor electric field is zero। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, Q enclosed by epsilon naught will be zero। epsilon naught जीरो नहीं हो सकता, so Q enclosed is zero। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के अंदर तुम कोई भी पोजीशन ले लो, कोई भी स्पेस ले लो, उसमें कोई चार्ज नहीं रह सकता। So that is third statement. The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation। स्टैटिक सिचुएशन कहने का मतलब कि कंडक्टर के अंदर चार्ज के मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं व्हेन वी रीड करंट, राइट, बट इन स्टैटिक सिचुएशन व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट you won't get any charge inside the conductor। ठीक है, if you are giving it charge, suppose कर लो conducting solid sphere है, so I am talking about now conducting solid sphere। so this is a conductor, right, solid sphere के अंदर स्पेस में हम चार्ज को रखना चाहेंगे। if you will give it charge, it won't accept it, it will send it to the surface। ये सारे चार्ज को कहाँ भेज देगा, क्योंकि तुम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, अंदर तो रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू इनक्लोज जीरो होना चाहिए। सो it won't keep any charge inside it, it will send all the charge to the surface। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट। एंड फोर्थ वन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्योंकि देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। तो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी अभी, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो, डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इफ डीवी इज जीरो इट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इनसाइड स्पेस। सो इनसाइड स्पेस का कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, और इसलिए इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल विल बी सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस। ठीक है, तो चलो एक काम करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों को रिवाइज करवाती हूँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये सबको क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे जाओ, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हारे लिए रीजन के साथ। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो this is okay, only some minutes left, but let me explain। at the surface of charged conductor electrostatic field must be normal to the surface। ये क्यों हो रहा है, अभी अभी मैंने बोला, ये फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस ई डॉट डी एल। सो फॉर एनी पॉइंट इफ यू आर टेकिंग इनसाइड देन डीवी क्या होगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सो डीवी इज जीरो, इट मीन्स पोटेंशियल इज व्हाट, कांस्टेंट। और पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब everywhere potential is same as that on the surface। so that makes conductor an equipotential surface। ये कंडक्टर को क्या बना रहा है, इक्विपोटेंशियल। और अगर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कल के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, इफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू इट। ठीक है, इसलिए सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। यस, क्योंकि इंटीरियर के लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज ई डॉट डी एस, आई मीन गॉस लॉ को यूज कर लो। एंड इंटीरियर किसी भी पॉइंट से पास करता हुआ अगर तुम गॉसियन सरफेस बनाते हो, एनी रैंडम सरफेस, देन थ्रू इट
there is no electric field, that is E dot ds is 0. So if this is 0, then Q enclosed by epsilon naught is also 0. It means there cannot be any charge enclosed inside the conductor. That's third statement. And fourth, I have already explained, potential will be constant. Is it clear, everybody? तो कल के क्लास को मैं कैसे स्टार्ट करूंगी? कल ये चैप्टर खत्म है, आज ही खत्म हो गया, टॉपिक वाइज तो खत्म है, कल हम क्वेश्चन करेंगे. सो कल की क्लास में आई विल समराइज थिंग्स. मैं सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज का लिस्ट, आई विल कलेक्ट एवरीथिंग एट इन वन प्लेस, एंड देन वी विल गो थ्रू दैट, वी विल डू क्वेश्चंस, एंड देन वी विल एंड दिस टॉपिक. ठीक है? किसी को डाउट है तो बताओ. थैंक यू किरण. देखो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैंने बताया है ना, इस पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना इन जेई, जेई एडवांस, नीट. आई मीन क्वेश्चंस आर फ्लडेड, और यहीं से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कैविटी, कंडक्टर्स. सो तुम लोग अगर फिजिक्स रियली इंजॉय करते हो ना, यू शुड ओपन बुक्स, यू शुड लुक एट क्वेश्चंस. एनसीईआरटी में भी कैविटी का क्वेश्चन दिया हुआ है. यू शुड लुक एट ऑल दोस थिंग्स. मजा आएगा जब क्वेश्चन होने लगेगा ना, यू विल फील लाइक कि यू आर ओपनिंग द बुक, यू आर एबल टू डू क्वेश्चंस, दैट विल गिव यू थ्रिल. So you should not devoid yourself of that thrill. You should open the book, you should do questions. I mean, yeah. So कल के क्लास में basically we will be doing lots of questions. Done? किसी को डाउट है तो बताओ. I am sitting here. If anyone has doubt, you can let me. Okay, Megha, Varshini, thank you, Lakshmi. चलो ठीक है, फिर तुम लोग अपना टेक केयर करो, कल मिलते हैं हम मोर क्वेश्चंस के साथ. चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय, बाय 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 बाय.